व्रज जन रंजन यशोदनंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी राधा माधव कुंज विहारी जय माधव कुंज विहारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय स्थान श्री प्रभुपाद की जय समवेत भक्त गोविंद की जय गौर Thank you, Prabhuji. So, I'd like to welcome all the devotees for today evening, Saturday evening program, Bhagavad Gita class. सभी उपस्थित भक्तों का स्वागत है. And we are very fortunate to have with us His Grace Narasimha Caitanya Prabhu. Prabhuji has been very kind from a very long time. And we are very fortunate to have his association, कन्यादेश. बहुत दिनों से हमें प्रभु जी का संग कन्यादेश में प्राप्त हो रहा है, शुरुआत के आरंभ के दिनों से. And the qualities which we should learn from Prabhuji, that the very first day when we met with Prabhuji, and after so many years, the same kind of attitude, the same humble mood. तो इतने वर्षों से प्रभु जी का विनम्र भाव हम सब देखते हुए आ रहे हैं, कोई परिवर्तन नहीं उसमें. आरंभ के दिनों से लेकर के अभी तक लगभग 15 वर्षों के पश्चात भी प्रभु जी का वैसे ही भाव है. वो इतने प्रगत भक्त हैं, हम समझ सकते हैं कि इतने दिनों से भगवान की सेवा में युक्त हैं और उम्र में भी वो इतने हम सबसे बड़े हैं, भक्ति में भी इतने बड़े हैं, लेकिन सदैव अपने आप को वो बहुत विनम्र समझते हैं और समझते हैं कि सब लोग हमसे बड़े हैं.
और एक जो भक्ति में उन्नत प्रगत भक्त हैं उनका ऐसे स्वभाव होता है, जितनी भक्ति में जितनी हमारे हृदय की शुद्धि होती है उतना ही भक्त विनम्र होते जाते हैं और अपने आप को उतना ही वो सबके समक्ष अपने आप को वो कनिष्ठ मानते हैं. सो दैट ऑलवेज वी लर्न फ्रॉम प्रभु. और उनका खुद का जो डेडिकेशन है प्रभुपाद जी के तात्पर्यों के प्रति, शुरुआत के आरंभ के दिनों से प्रभुपाद जी ग्रंथों का अध्ययन करना, बहुत गंभीरता से उनके तात्पर्यों को समझना, तो ये जब ऐसे भक्तों का संग हमें प्राप्त होता है तो सदैव हमको ये वांछा करनी चाहिए कि उनके वाणी से क्या लिए बस जितना उनका अनुभव भी है वो भी उसके साथ में उनकी कृपा भी साथ में आती है. जब वरिष्ठ भक्त कुछ बोलते हैं तो वो हम सबको ध्यान रखते हुए कुछ बोलते हैं, जिससे कि हम लोग उन चीज़ों को अपना करके जैसे वो उन्नति करते हुए आए वैसे हमको भी उन्नति करने में वो सहायता करें. इसी भाव से वो उद्देश्य से भी वो बोलते हैं, वो करुणावश बोलते हैं. तो बहुत ध्यानपूर्वक हम लोग श्रवण करेंगे प्रभु जी का और स्वागत करेंगे भगवान के नाम का आशीर्वाद लेते हुए. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम. Please, Prabhuji. So I'll be hearing Prabhuji, and Prabhuji will be there. Prabhuji very kindly agreed to translate Prabhuji. Thank you. Hare Krishna. Oh, okay. Okay. Hare Krishna. Then okay. Prabhuji, this purport is length purport I can read in both English and Yes, Prabhuji. We can read Prabhuji. Each word of Sri Prabhupada will be. okay. Hare. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskrityam Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tado Jayam Udayit Nashtaprayeshu Bhatreshu Nityam Bhagavate Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhaktir Bhavati Naishagi Krishnaya Vasudevaya Devaki Nandanaisa Nandagopra Kumaraya Govindaya Namo Namaha. Reading from Srimad Bhagavatam, Srimad Bhagavad Gita as it is, chapter 10, sloka number 4 and 5. It is together. I will read. Buddhir jnanam asammoha Shama Satyam Dhamma Sama Sukham Dukkham Bhavo Bhavo Bhayam Cha Bhayam Yeva Cha Ahimsa Samadha Tushtis Tabodhanam Yasho Yasa Bhavandi Bhava Bhutanam Matta Eva Pradakvidam Buddhir Jnanam Asammoha Kshama Satyam Dhamma Sama Sukham Dukkham Bhavo Bhavo Bhayam Cha Bhayam Yeva Cha Ahimsa Samadha Tustis Tabodhanam Yasho Yasa Bhavandi Bhava Bhutanam Matta Eva Pradakvidam Buddhir Jnanam Asammoha Shama Satyam Dhamma Sama Sukham Dukkham Bhavo Bhavo Bhayam Cha Bhayam Yevata Ahimsa Samadha Tustis Abhodanam Yasho Yasa Bhavandi Bhava Bodhanam Matta Eva Pridakvidam. Prabhuji, can you read it? Anyone? Yes, Prabhuji. Hare Ram. Krishna, Prabhuji. Yes, Prabhuji. Buddhi Jnanam Sammoha Kshama Satyam Dhamma Shama Sukham Dukham Bhavo Abhavo Bhayam Cha Bhayameva Cha
अहिंसा समता तुष्टिस्स तपोदानं यशो यश भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथग्विदा. Word by word meaning: buddhi, intelligence, jnanam, knowledge, asammoha, freedom from doubt, shama, forgiveness, satyam, truthfulness, dhamma, control of the senses, sama, control of the mind, sukham, happiness, dukkham, distress, bhava, birth, bhava, death, bhayam, fear, also abhayam, fearlessness, eva, also and ahimsa, non-violence, samadha, equilibrium, tushti, satisfaction, tapa, penance, dhanam, charity, yasa, fame, ya, yasa, yasa, infamy, bhavandi, come out, bhava, natures, udana, of living entities, matta, from me, eva, certainly, prutak, vitaha, variously arranged. Translation and purport by His Divine Grace A.G. Bhaktivedanta Swami Prabhupada Srila Prabhupada Ki Jai. Translation: intelligence, knowledge, freedom from doubt and delusion, forgiveness, truthfulness, control of the senses, control of the mind, happiness and distress, birth, death, fear, fearlessness, non-violence, equanimity, satisfaction, austerity, charity, fame and infamy, all these various qualities of living beings are created by me alone. Purport. The different qualities of living entities, be they good or bad, are all created by Krishna, and they are described here. Intelligence refers to the power to analyze things in their proper perspective, and knowledge refers to understanding what is spirit and what is matter. Ordinary knowledge obtained by a university education pertains only to matter, and it is not accepted here as knowledge. Knowledge means knowing the distinction between spirit and matter. In modern education, there is no knowledge about spirit. They are simply taking care of the material elements and bodily needs. Therefore, academic knowledge is not complete. Asamoha, freedom from doubt and delusion, can be achieved when one is not hesitant and when he understands the transcendental philosophy. Slowly but surely he becomes free from bewilderment. Nothing should be accepted blindly. Everything should be accepted with care and with caution. Shama, tolerance, and forgiveness should be practiced. One should be tolerant and excuse minor offenses of others. Satyam, truthfulness, means that facts should be presented as they are for the benefit of others. Facts should not be misrepresented. According to social conventions, it is said that one can speak the truth only when it is palatable to others, but that is not truthfulness. The truth should be spoken in a straightforward way so that others will understand actually what the facts are. If a man is a thief, and if people are warned that he is a thief, that is truth. Although sometimes the truth is unpalatable, one should not refrain from speaking it. Truthfulness demands that the facts be presented
as they are for the benefit of others. That is the definition of truth. Control of the senses means that the senses should not be used for unnecessary personal enjoyment. There is no prohibition against meeting the proper needs of the senses, but the unnecessary sense enjoyment is detrimental for spiritual advancement. Therefore, the senses should be restrained from unnecessary use. Similarly, one should restrain the mind from unnecessary thoughts. That is called sana. One should not spend one's time pondering over earning money. That is a misuse of the thinking power. The mind should be used to understand the prime necessity of human beings. And that should be presented authoritatively. The power of thought should be developed in association with the persons who are authorities in the scriptures, saintly persons, and spiritual masters, and those who thinking is highly developed. Sukham, pleasure, or happiness should always be in that which is favorable for the cultivation of the spiritual knowledge of Krishna consciousness. And similarly, that which is painful or which causes distress is that which is unfavorable for the cultivation of Krishna consciousness. Anything favorable for the development of Krishna consciousness should be accepted, and anything unfavorable should be rejected. Birth should be understood to refer to the body. As far as the soul is concerned, there is neither birth nor death. That we have discussed in the beginning of Bhagavad Gita. Birth and death apply to one's embodiment in the material world. Fear is due to worrying about the future. A person in Krishna consciousness has no fear because by his activities he should to go back to the spiritual way, back home, back to Godhead. Therefore, his future is very bright. Others, however, do not know what their future holds. They have no knowledge of what the next life holds. So they are therefore in constant anxiety. If you want to get free from anxiety, then the best course is to understand Krishna and be situated always in Krishna consciousness. In that way, we will be free from all fear. In the Srimad Bhagavad 11.237, it is stated, Bayam Vidya Vinna Vasedaha Syat. Fear is caused by our absorption in the illusory energy. But those who free from the illusory energy, those who are confident that they are not the material body, that they are spiritual parts of the Supreme Personality Godhead, and who are therefore engaged in the transcendental service of the Supreme Godhead, have nothing to do, nothing to fear. Their future is very bright. That this fear is condition of persons who are not in Krishna consciousness. Abhayam, fearlessness, is possible only for one in Krishna consciousness. Ahimsa, non-violence, means that one should not do anything which will put others into misery or confusion. Material activities that are promised by so many politicians, sociologists, philanthropists, etc., do not produce any very good results because the politicians and philanthropists have no transcendental vision. They do not know what is actually beneficial for human society. Ahimsa means that people should be trained in such a way that the full utilization of the human body can be achieved. The human body is meant for spiritual realization. So, any movement or any commissions which do not further that and commit violence on the human body, that which furthers the future spiritual
happiness of the people in general is called non-violence. Samadha equanimity refers to freedom from attachment and aversion. To be very much attached or to be very much detached is not the best. This material world should be accepted without attachment or aversion. That which is favorable for prosecuting Krishna consciousness should be accepted. That which is unfavorable should be rejected. That is called equanimity. A person in Krishna consciousness has nothing to reject and nothing to accept, save in terms of its usefulness in the prosecution of Krishna consciousness. Sushti satisfaction means that one should not be eager to gather more and more material goods by unnecessary activity. One should be satisfied with whatever is obtained by the grace of the Supreme Lord. That is called satisfaction. Tapas means austerity or penance. There are many rules and regulations in the Vedas which apply here, like rising early in the morning and taking a bath. Sometimes it is very troublesome to rise early in the morning. But whatever voluntary trouble one may suffer in this way is called penance. Similarly, there are prescriptions for fasting on certain days of the month. One may not be inclined to practice such a fasting, but because of his determination to make advancement in the science of Krishna consciousness, he should accept such a bodily troubles when they are accommodated. However, one should not fast unnecessarily or against Vedic injunction. One should not fast for some political purpose. That is described in Bhagavad as fasting in ignorance, and anything done in ignorance and passion does not lead to spiritual advancement. Everything done in the mode of goodness does advance one. However, and fasting done in terms of the Vedic injunction enriches one in spiritual knowledge. As far as charity is concerned, one should give 50% of his earnings to some good cause. And what is a good cause? It is that which is conducted in the terms of Krishna consciousness. That is not only a good cause, but the best cause. But Krishna is good. Because Krishna is good, his cause is also good. The charity should be given to a person who is engaged in Krishna consciousness. According to Vedic literature, it is enjoined that charity should be given to the Brahmanas. This practice is still followed, although not very nicely in terms of Vedic instruction. But still, the injunction is that charity should be given to Brahmanas. Why? Because they are engaged in cultivation of spiritual knowledge. A Brahmana is supposed to devote his whole life to understanding Brahman. Brahma Janadi the Brahmana. One who knows Brahman is called a Brahmana. Thus, charity is offered to Brahmanas because they are always engaged in higher spiritual service and have no time to earn their livelihood. In the Vedic literature, charity is also to be awarded to one in the renounced hour of life, the sannyasi. The sannyas is like from door to door, not for money, but for missionary purposes. The system is that they go from door to door, awaken the householders from slumber of ignorance. Because the householders are engaged in family affairs and have forgotten their actual purpose in life, awakening their Krishna consciousness, it is business of the sannyasis to go as beggars to the householder and encourage them to be Krishna conscious. As it is said in the Vedas, one should awake and achieve what is due him in this human form of life. This knowledge and method is
tributed by the sannyasis. Hence, charity is to be given to the renouncers of life, to the brahmanas, and similar good causes, not to any whimsical cause. Yes, as fame should be according to Lord Chaitanya, who said that a man is famous when he is known as a great devotee. That is real fame. If one has become a great man in the Krishna consciousness and it is known, then he is truly famous. One who does not have such a fame is infamous. All these qualities are manifest throughout the universe in human society and in the society of demigods. There are many forms of humanity on other planets, and these qualities are there. Now, for one who wants to advance in consciousness, Krishna creates all these qualities, but the person develops them himself from it. One who engages in the devotional service of the Supreme Lord develops all the good qualities as arranged by the Supreme Lord. Of whatever we find, good or bad, the origin is Krishna. Nothing can manifest itself in this material world which is not in Krishna. That is knowledge. Although we know that things are differently situated, we should realize that everything flows from Krishna. Hare Krishna. Prabhuji, Hare Krishna, Prabhuji. Dandavat pranam, Prabhuji. you want to read in Hindi? Yes, Prabhuji, the Okay. majority understand Hindi, so with your Yes, permission, okay. I read Prabhuji. Okay. Hare Krishna. Hare Krishna. So 10वें अध्याय के चौथे और 5वें श्लोक का अनुवाद और तात्पर्य शिल प्रभुपाद द्वारा। शिल प्रभुपाद की जय। तो अनुवाद इस प्रकार से है। बुद्धि, ज्ञान, संशय तथा मोह से मुक्ति, क्षमा भाव, सत्यता, इंद्रिय निग्रह, मन निग्रह, सुख तथा दुख, जन्म मृत्यु, भय अभय, अहिंसा, समता, तुष्टि, तप, दान, यश तथा अपयश, जीवों के ये विविध गुण मेरे ही द्वारा उत्पन्न है। तात्पर्य: जीवों के अच्छे या बुरे गुण कृष्ण द्वारा उत्पन्न है और यहाँ पर उनका वर्णन किया गया है। बुद्धि का अर्थ है नीर क्षीर विवेक वाली करने वाली शक्ति, और ज्ञान का अर्थ है आत्मा तथा पदार्थ को जान लेना। विश्वविद्यालय की शिक्षा से प्राप्त सामान्य ज्ञान मात्र पदार्थ से संबंधित होता है। यहाँ इसे ज्ञान नहीं स्वीकार किया गया है। ज्ञान का अर्थ है आत्मा तथा भौतिक पदार्थ के अंतर को जानना। आधुनिक शिक्षा में आत्मा के विषय में कोई ज्ञान नहीं दिया जाता, केवल भौतिक तत्वों तथा शारीरिक आवश्यकताओं पर ध्यान दिया जाता है। फलस्वरूप शैक्षिक ज्ञान पूर्ण नहीं है। असमोह अर्थात संशय तथा मोह से मुक्ति तभी प्राप्त हो सकती है जब मनुष्य झिझकता नहीं और दिव्य दर्शन को समझता है। वह धीरे धीरे निश्चित रूप से मोह से मुक्त हो जाता है। हर बात को सतर्कता पूर्वक ग्रहण करना चाहिए, आंख मूंदकर कुछ भी स्वीकार नहीं करना चाहिए। क्षमा का अभ्यास करना चाहिए, मनुष्य को सहिष्णु होना चाहिए और दूसरों के छोटे छोटे अपराध क्षमा कर देना चाहिए। सत्यम का अर्थ है कि तथ्यों को सही रूप से अन्यों के लाभ के लिए प्रस्तुत किया जाए। तथ्यों को तोड़ना मरोड़ना नहीं चाहिए। सामाजिक प्रथा के अनुसार कहा जाता है कि वही सत्य बोलना चाहिए जो अन्यों को प्रिय लगे, किंतु यह सत्य नहीं है। सत्य को सही सही रूप में बोलना चाहिए जिससे दूसरे लोग समझ सकें कि सच्चाई क्या है। यदि कोई मनुष्य चोर है और यदि लोगों को सावधान कर दिया जाए कि अमुक व्यक्ति चोर है, तो यह सत्य है। यद्यपि सत्य कभी कभी अप्रिय होता है, किंतु सत्य कहने में संकोच नहीं करना चाहिए। सत्य की मांग है कि तथ्यों को यथा रूप में लोकहित के लिए प्रस्तुत किया जाए
यही सत्य की परिभाषा है। दमः का अर्थ है कि इंद्रियों को व्यर्थ के विषय भोग में न लगाया जाए। इंद्रियों की समुचित आवश्यकताओं की पूर्ति निषेध नहीं है, किंतु अनावश्यक इंद्रिय भोग आध्यात्मिक उन्नति में बाधक है। फलतः इंद्रियों के अनावश्यक अनावश्यक उपयोग पर नियंत्रण रखना चाहिए। इसी प्रकार मन भी अनावश्यक विचारों के विरुद्ध संयम रखना चाहिए। इसे शम कहते हैं। मनुष्य को चाहिए कि धन अर्जन के चिंतन में ही सारा समय न गंवाए। यह चिंतन शक्ति का दुरुपयोग है। मन का उपयोग मनुष्य की मूल आवश्यकताओं को समझने के लिए किया जाना चाहिए और उसे ही प्रमाण पूर्वक प्रस्तुत करना चाहिए। शास्त्र मर्मज्ञों, साधु पुरुषों, गुरुओं तथा महान विचारकों की संगति में रहकर विचार शक्ति का विकास करना चाहिए। जिस प्रकार से कृष्ण भावनामृत के आध्यात्मिक ज्ञान के अनुशीलन में सुविधा हो वही सुखम है, इस प्रकार दुखम वह है जिससे कृष्ण भावनामृत के अनुशीलन में असुविधा हो। जो कुछ कृष्ण भावनामृत के विकास के अनुकूल हो उसे स्वीकार करें और जो प्रतिकूल हो उसका परित्याग करें। भव अर्थात जन्म का संबंध शरीर से है। जहाँ तक आत्मा का प्रश्न है वह न तो उत्पन्न होता है न मरता है। इसकी व्याख्या हम भगवत गीता के प्रारंभ में ही कर चुके हैं। जन्म तथा मृत्यु का संबंध इस भौतिक जगत में शरीर धारण करने से है। भय तो भविष्य की चिंता से उद्भूत है। कृष्ण भावनामृत में रहने वाला व्यक्ति कभी भयभीत नहीं होता, क्योंकि वह अपने कर्मों द्वारा भगवत धाम को वापस जाने के प्रति आश्वस्त रहता है। फलस्वरूप उसका भविष्य उज्जवल होता है। किंतु अन्य लोग अपने भविष्य के विषय में कुछ नहीं जानते। उन्हें इसका कोई ज्ञान नहीं होता कि अगले जीवन में क्या होगा। फलस्वरूप वे निरंतर चिंताग्रस्त रहते हैं। यदि हम चिंता मुक्त होना चाहते हैं तो सर्वोत्तम उपाय यह है कि हम कृष्ण को जानें तथा कृष्ण भावनाव्रत में निरंतर स्थित रहें। इस प्रकार हम भय से मुक्त रहेंगे। श्रीमद् भागवतम में 11:2-37 कहा गया है, भयम द्वितीय अभिनिवेशतः स्यात्। भय तो हमारे माया पाश में फंस जाने से उत्पन्न होता है, किंतु जो माया के जाल से मुक्त है, जो आश्वस्त है कि वे शरीर नहीं अपितु भगवान के आध्यात्मिक अंश हैं और जो भगवत भक्ति में लगे हुए हैं, उन्हें कोई भय नहीं रहता। उनका भविष्य अत्यंत उज्जवल है। यह भय तो उन व्यक्तियों की आवश्यक अवस्था है जो कृष्ण भावनामृत में नहीं है। अभ्यम तभी संभव है जब कृष्ण भावनामृत में रहा जाए। अहिंसा का अर्थ होता है कि अन्यों को कष्ट न पहुंचाया जाए। जो भौतिक कार्य अनेकानेक राजनीतिज्ञों, समाजशास्त्रियों, परोपकारियों आदि द्वारा किए गए हैं, उनके परिणाम अच्छे नहीं निकलते, क्योंकि राजनीतिज्ञों तथा परोपकारियों में दिव्य दृष्टि नहीं होती। वे यह नहीं जानते कि वास्तव में मानव समाज के लिए क्या लाभप्रद है। अहिंसा का अर्थ है कि मनुष्यों को इस प्रकार से प्रशिक्षित किया जाए कि इस मानव देह का पूरा पूरा उपयोग हो सके। मानव देह आत्म साक्षात्कार के हेतु मिली है। अतः ऐसी कोई संस्था या संघ जिससे उद्देश्य की पूर्ति में प्रोत्साहन ना हो, मानव देह के प्रति हिंसा करने वाला है, जिससे मनुष्यों के भावी आध्यात्मिक सुख में वृद्धि हो, वही अहिंसा है। समता से राग द्वेष से मुक्ति द्योतित होती है। न तो अत्यधिक राग अच्छा होता है, न अत्यधिक द्वेष ही। इस भौतिक जगत को राग द्वेष से रहित होकर स्वीकार करना चाहिए। जो कुछ कृष्ण भावनाव्रत को संपन्न करने में अनुकूल हो उसे ग्रहण करें और जो प्रतिकूल हो उसका त्याग कर दें। यही समता है। कृष्ण भावनामृत युक्त व्यक्ति को न तो कुछ ग्रहण करना होता है न त्याग करना होता है। उसे तो कृष्ण भावनामृत संपन्न करने में उसकी उपयोगिता से प्रयोजन रहता है। तुष्टि का अर्थ है कि मनुष्य को चाहिए कि अनावश्यक कार्य करके अधिकाधिक वस्तुएं एकत्र करने के लिए उत्सुक ना रहे। उसे तो ईश्वर की कृपा से जो प्राप्त हो जाए उसी से प्रसन्न रहना चाहिए। यही तुष्टि है। तपस का अर्थ है तपस्या। तपस के अंतर्गत वेदों में वर्णित अनेक विधि विधानों का पालन करना होता है।
यथा प्रातःकाल उठना और स्नान करना। कभी कभी प्रातःकाल उठना अति कष्टकारक होता है, किंतु इस प्रकार स्वेच्छा से जो भी कष्ट सहे जाए वे तपस्या तपस्या कहलाते हैं। इसी प्रकार मास के कुछ विशेष दिनों में उपवास रखने का भी विधान है। हो सकता है कि इन उपवासों को करने की इच्छा ना हो, किंतु कृष्ण भावनामृत के विज्ञान में प्रगति करने के संकल्प के कारण उसे ऐसे शारीरिक कष्ट उठाने होते हैं, किंतु उसे व्यर्थ ही अथवा वैदिक आदेश के प्रतिकूल उपवास करने की आवश्यकता नहीं है। उसे किसी राजनीतिक उद्देश्य से उपवास नहीं करना चाहिए। भगवत गीता में इसे तामसी उपवास कहा गया है। तथा किसी भी ऐसे कार्य से जो तमो गुण या रजोगुण में किया जाता है आध्यात्मिक उन्नति नहीं होती, किंतु सतोगुण में रहकर जो भी कार्य किया जाता है वह समुन्नत बनाने वाला है। अतः वैदिक आदेशों के अनुसार किया गया उपवास आध्यात्मिक ज्ञान को समुन्नत बनाता है। जहाँ तक दान का संबंध है, मनुष्य को चाहिए कि अपनी आय का 50% किसी शुभ कार्य में लगाए। और यह शुभ कार्य क्या है? यह है कृष्ण भावनामृत में किया गया कार्य। ऐसा कार्य शुभ ही नहीं अपितु सर्वोत्तम होता है, किंतु कृष्ण अच्छे हैं इसलिए उनका कार्य निमित्त भी अच्छा है। अतः दान उसे दिया जाए जो कृष्ण भावनामृत में लगा हो। वेदों के अनुसार ब्राह्मणों को ध्यान दिया जाना चाहिए। यह प्रथा आज भी चालू है, यद्यपि इसका स्वरूप वह नहीं है जैसा कि वेदों का उपदेश है। फिर भी आदेश ये है कि दान ब्राह्मणों को दिया जाए। यह क्यों? वह क्यों? क्योंकि वे आध्यात्मिक ज्ञान के अनुशीलन में लगे हैं। ब्राह्मण से यह आशा की जाती है कि वह सारा जीवन ब्रह्म जिज्ञासा में लगा दे। ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण, जो ब्रह्म को जाने वही ब्राह्मण है। इसलिए दान ब्राह्मणों को दिया जाता है क्योंकि वे सदैव आध्यात्मिक कार्य में रत रहते हैं और उन्हें जीवों को पार्जन के लिए समय नहीं मिल पाता। वैदिक साहित्य में सन्यासियों को भी दान दिए जाने का आदेश है। सन्यासी द्वार द्वार जाकर भिक्षा मांगते हैं। वे धनार्जन के लिए नहीं अपितु प्रचारार्थ प्रचारार्थ ऐसा करते हैं। वे द्वार द्वार जाकर गृहस्थों को अज्ञान की निद्रा से जगाते हैं। क्योंकि गृहस्थ गृह कार्यों में व्यस्त रहने के कारण अपने जीवन के वास्तविक उद्देश्य को कृष्ण भावनामृत जगाने को भूले रहते हैं। अतः ये सन्यासियों का कर्तव्य है कि वे भिखारी बनकर गृहस्थों के पास जाएं और कृष्ण भावना भावित होने के लिए उन्हें प्रेरित करें। वेदों का कथन है कि मनुष्य जागे और मानव जीवन में जो प्राप्त करना है उसे प्राप्त करे। सन्यासियों द्वारा यह ज्ञान तथा विधि वितरित की जाती है। अतः सन्यासी को ब्राह्मणों को इसी प्रकार के उत्तम कार्यों के लिए दान देना चाहिए, किसी सनक के कारण नहीं। यश भगवान चैतन्य के अनुसार होना चाहिए। उनका कथन है कि मनुष्य तभी प्रसिद्धि यश प्राप्त करता है जब वह महान भक्त के रूप में जाना जाता हो। यही वास्तविक यश है। यदि कोई कृष्ण भावना व्रत में महान बनता है और विख्यात होता है तो वही वास्तव में प्रसिद्ध है। जिसे ऐसा यश प्राप्त ना हो वह अप्रसिद्ध है। ये सारे गुण संसार भर में मानव समाज में तथा देव समाज में प्रकट होते हैं। अन्य लोकों में भी विभिन्न तरह के मानव हैं और ये गुण उनमें भी होते हैं। तो जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में प्रगति करना चाहता है उसमें कृष्ण ये सारे गुण उत्पन्न कर देते हैं, किंतु मनुष्य को तो इन्हें अपने अंदर में विकसित करना होता है। जो व्यक्ति भगवान की सेवा में लग जाता है वह भगवान की योजना के अनुसार इन सारे गुणों को विकसित कर लेता है। हम जो कुछ भी अच्छा या बुरा देखते हैं उसका मूल श्री कृष्ण है। इस संसार में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो कृष्ण में स्थित ना हो। यही ज्ञान है। यद्यपि हम जानते हैं कि वस्तुएं भिन्न रूप से स्थित हैं, किंतु हमें यह अनुभव करना चाहिए कि सारी वस्तुएं कृष्ण से ही उत्पन्न है। हरे कृष्ण प्रभु जी, कंप्लीटेड। ओम ज्ञानातिमरण्यस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति सुपदान्तिकम्।
Vandeham Sri Guru Sri Udapadamam Sri Guru Vaishnavam Sri Rupam Saprasadam Sadanaragunadhanidam Tam Sajivam Sadhaitam Sadhutam Varijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padam Sahajana Varidhan Sri Vishnavanam He Krishna Karuna Sindhu Dinam Bindhu Jagatale Govesha Govika Kanta Radha Kanta Sri Tapta Kanta Gaurangi Radhe Ganeshwari Vishwanu Sure Devi Pranamami Hari Priya Vancha Pavapatari Vaishya Visham Padidana Deviti Vaishya Namo Mishabhalaya Sabhashaya Shrimade Bhaktivedanta Swami Nidhamine Namaste Saraswati Deve Guruvani Pachani Nirvishesha Shunavadi Prasada Desa Tarani Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Dvaita Gadadhara Shivashadi Gaur Bhaktavranda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna. I welcome all the assembled devotees for the Saturday Srimad Bhagavad Gita cities class. सर्वप्रथम प्रभु जी सभी भक्तों का स्वागत कर रहे हैं इस शनिवारीय भगवत गीता कक्षा में। So I am not that much qualified to speak on this Bhagavad Gita. So I am speaking this for my own purification and thanks for the Prabhuji's giving me the chances to for my purification. प्रभु जी विनम्रता से बोल रहे हैं कि मेरी योग्यता नहीं है भगवत गीता कक्षा की, परंतु अपनी शुद्धि के लिए मैं ये प्रयास कर रहा हूँ और सभी भक्तों का जिन्होंने ये अवसर दिया उनका धन्यवाद। So I request all the assembled Vaishnavas, please bless me so that I can do the service without any. सभी वैष्णवों से निवेदन है कि अपना आशीर्वाद प्रदान करिए। So Bhagavad Gita, it is spoken by the Lord Sri Krishna to Arjuna in the battlefield of Kurukshetra. भगवत गीता का ज्ञान भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में दिया। So Arjuna was in the confusion, doubts about his discharge of his duties. So Lord encouraged by him to do his Kshatriya duty by instructing him the knowledge. तो अर्जुन युद्ध के मैदान में भ्रमित हो गए थे और भगवान श्री कृष्ण ने उनको उत्साहित किया कि अपने क्षत्रिय धर्म का पालन कीजिए और उनको ये गीता का ज्ञान प्रदान किया। This knowledge is given to Arjuna, and at the same time, it is for all the human society in the material world. तो ये ज्ञान अर्जुन को दिया गया और उसके साथ साथ ये ज्ञान सभी मनुष्यों को, मनुष्य के समाज को, सभी के लिए ये ज्ञान दिया गया है। Because in this day-to-day life, everyone is doubtful and confused state for discharging his duties relating to personal and spiritual. तो आज के युग में सभी अपने धर्म को लेके भ्रमित हैं, भले ही वो और आध्यात्मिक रूप से भी उनको बहुत भ्रम रहता है। More or less, the whole human society is become a godless society. और मुख्यतया मानव समाज में ज्यादातर व्यक्ति नास्तिक हो गए हैं। So this is very important to teach all these conditioned soul
about the Bhagavad Gita and encourage them in the devotional service and reminding them their constitutional position. तो ये अत्यंत आवश्यक हो गया है कि भगवत गीता का ज्ञान सबको मिले, ताकि सबको अपने धर्म के विषय में पता हो, और सबको ये भक्ति का ज्ञान मिले, और सबको ये रहे पता कि उनकी वास्तविक स्थिति क्या है। So it's the aim of the human society is to attain the spiritual perfection, but it is forgotten by now. तो मानव समाज का लक्ष्य है आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त करें, परंतु सब इस लक्ष्य को भूल चुके हैं। So now the total material world is in a fighting mode, and also this misunderstanding between the human beings and between the religions and between the nation because of want of this superior knowledge. तो इस मानव समाज में अनेक प्रकार से युद्ध और लड़ाइयाँ हो रही हैं, और इस प्रकार से ये जो उच्च आध्यात्मिक ज्ञान है, इसकी आवश्यकता और भी है। So Lord, the message Bhagavad Gita, it is mainly for the whole human society, irrespective of the nation or religiosity and country and other things. तो ये जो ज्ञान है भगवान कृष्ण ने दिया है, ये मनुष्य मात्र के लिए है। ये कोई किसी प्रकार का कोई देश या किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है, ये मानव मात्र के लिए है। So all the human societies should accept this great knowledge, which will give us the eternal benefit and position in our constitutional position, so that तो we मानव can समाज में go Yes. back to Godhead. तो मानव समाज में ये ज्ञान सबको प्राप्त करना चाहिए, ताकि सबको अपनी स्थिति पता चले कि व्यक्ति कौन है अंततः, और वापस अपने भगवान श्री कृष्ण के धाम वो वापस जा पाए। इसलिए गीता का ज्ञान सबको मिलना चाहिए। So today we are reading this chapter. Name is opulence of the absolute, the opulence of the supreme personality of Godhead. तो हम जो आज अध्याय 10 का पठन कर रहे हैं, उसका शीर्षक है श्री भगवान का ऐश्वर्य। Unless one understands the opulence of the supreme personality of Godhead and relationship with him, we cannot engage in the devotional service of the supreme personality of Godhead. जब तक हमें श्री भगवान का ऐश्वर्य पता नहीं चलेगा और हमारा उनसे संबंध क्या है वो पता नहीं चलेगा, तब तक हम श्री भगवान की भक्ति मई सेवा में नहीं लग सकते। By the causeless mercy of the supreme personality of God, Sri Krishna, this knowledge of Bhagavad Gita given to all the conditioned soul in order to elevate them to the liberated soul. सो भगवान के हेतु की कृपा से ये ज्ञान सभी बद्ध जीवात्माओं को मिला है, ताकि वो सभी बद्ध जीवात्माएं मुक्त आत्माएं बन सके। In this sloka 4 and 5, there are
20 qualities described which all living entities, human beings should have. तो ये श्लोक 4-5 जो आज हम पठन कर रहे हैं उसमें 20 गुणों की व्याख्या है जो सभी मनुष्य में होनी चाहिए. Actually, in the Bhagavad 11th canto, second chapter, it is explained there are 26 qualities Prabhupada mentioned, which is from the Chaitanya Charitamrita, which should have all the living entities who claims as a Vaishnavas. तो श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंद के दूसरे अध्याय में श्रील प्रभुपाद ने चैतन्य चरितामृत से 26 गुणों को बताया है जो सभी वैष्णवों में होने चाहिए. So, in this 20 qualities, we can see one by one. In the first, it is come intelligence. तो हम इन सभी गुणों को जो आज के श्लोकों में बताए हैं एक के बाद एक देखेंगे. सबसे पहले गुण है बुद्धि. So, in the bodily function hierarchy, it is said in the Bhagavad Gita, that chapter, Indriyani Paranyahu Indriyapya Paramana Manasastu Parabhuti Yog Buddhi Paradastha. That means the body sense, from the body senses are superior. From next superior to senses is the mind. The superior to mind is intelligence, and superior to intelligence is soul. तो भगवत गीता के तीसरे अध्याय में श्लोक आता है इंद्रियाणि पराणाहु इंद्रियो विपन्नमना मनस्तु परा बुद्धिरो बुद्धे पर सस्तु से. तो इसमें बताया गया है कि जो पंच भूत हैं तत्व है जिनसे शरीर बना है उनसे इंद्रियां श्रेष्ठ हैं और उन इंद्रियों से मन श्रेष्ठ है और मन से भी श्रेष्ठ बुद्धि है और अंततः सबसे श्रेष्ठ बुद्धि से भी श्रेष्ठ आत्मा है. Here, the senses are acquired some activities. It cannot be idle. So, it can be either engaged in the material activities or in the spiritual activities. तो जो इंद्रियां हैं उनको कुछ ना कुछ कार्य चाहिए और इस प्रकार से या तो वो आध्यात्मिक कार्यों में युक्त हो सकती हैं या फिर भौतिक कार्यों में. When it is engaged in the material activities, it develops the relationship to sense objects. So, when develops sense desire with the sense object, it is desire the association of the senses. So, by associate, when the desires are not fulfilled, anger comes. So, when the anger comes, we lost our memory. When we lost our memory, our intelligence is lost. तो So, our intelligence is lost, we fall down from our position. तो श्रीमद् भगवत गीता में उल्लेख है कि किस प्रकार से जब जो श्लोक है अध्याय तो विषयान पुंसा कि जिस प्रकार से जब मनुष्य विषय के विषय में विचार करता है भौतिक कार्यों में लगता है तो उससे वो आसक्त हो जाता है और फिर और उस आसक्ति से फिर उसको जब वो उसकी इच्छाएं पूर्ण नहीं होती हैं उन कार्यों से जो चाहता है तो फिर क्रोध उस व्यक्ति में उत्पन्न होता है और फिर क्रोध के बाद वो सम्मोहित हो जाता है और उसके बाद उसकी जो स्मृति है वो भ्रमित होती है और फिर अंततः
जब स्मृति भ्रमित होती है तो वो अपने पाथ मार्ग से च्युत हो जाता है। So we should, the intelligence is acts a important role in the activities of the senses by through mind. तो इसलिए बुद्धि का बहुत बड़ा इसमें भाग है कि कैसे मन के द्वारा इंद्रियों को नियंत्रित करें। Here, Srila Prabhupada writes, the intelligence means refers to the power to analyze things in their proper perspective. तो प्रभुपाद जी ने बताया है कि बुद्धि का अर्थ है नीर और क्षीर विवेक करने वाली शक्ति। So, if you are not properly analyze what is good, what is beneficial for the living entity, otherwise we will be fall down from our what is the real goal of the human life. तो अगर अच्छे और बुरे में अ, जानने वाली विवेक शक्ति बुद्धि नहीं है तो फिर जो मनुष्य का जो उद्देश्य है जीवन का उससे वो मनुष्य च्युत हो जाता है। So we should engage in the senses in the uh, process of devotional service, because the senses are the preparator for the senses or the Supreme Personality of Godhead. One of the name of the Lord is Krishikesha. Krishikesha means one who controls the senses. तो इस प्रकार से इंद्रियों को भक्तिमय सेवा में युक्त करना चाहिए, क्योंकि जो इंद्रियां हैं उनके स्वामी हैं भगवान श्री कृष्ण, जिनको ऋषिकेश भी बोलते हैं। So when we use in the engage our senses in the service of the Supreme Personality of Godhead, the Lord says in the Bhagavad Gita, Desam sadada yuktanam bhajadam priti puraham tatami buddhiyahum tamena mamubhaya. That means when we are doing the devotional service, priti puraham, with unalloyed devotional service to the Lord, Lord gives the buddhi yoga, the proper intelligence, how we can discriminate the activities of the senses. तो इसमें भगवत गीता में बताया है कि भगवान श्री कृष्ण की जो श्लोक है, तेषाम सततयुक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम, तो जो अपने इंद्रियों के द्वारा वो नित्य भगवान की सेवा में उनको युक्त रखते हैं, तो उनको भगवान फिर इस प्रकार से बुद्धि योग देते हैं कि वो भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। The buddhi yoga, it is or bhakti yoga, otherwise it's called, is given our direction to our senses according to our surrender. That another sloka in the Bhagavad Gita, it said, "Yedam mam prapadyante." How much we surrender to the Lord, how much we dedicated our senses in the service of Lord, accordingly Lord gives a direction to us. तो जैसे ये था माम प्रपद्यन्ते श्लोक में वर्णित है कि जिस जिस प्रकार से एक जीवात्मा भगवान के प्रति शरणागत होता है, उस प्रकार से भगवान उसका मार्गदर्शन करते हैं। So next is knowledge. Knowledge refers to understanding what is spirit and what is matter. तो इसके बाद अगला गुण है ज्ञान, और इसका अर्थ है कि आत्मा तथा पदार्थ को जानना।
So Prabhupada writes in the purport, whatever the material world, the university or educational institution give us all our material knowledge. It is called avidya. तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जो विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त होती है वो सिर्फ पदार्थ से संबंधित होता है और वो अविद्या होता है। It is related to the senses and it is said it is incomplete. और ये सिर्फ इंद्रियों का ज्ञान होता है और वो पूर्ण नहीं है। So Prabhupada writes, knowledge means one who knows the exactly the position of the spirit, matter, and controller of the both. That is Paramatma, the Supreme Personality of Godhead. तो प्रभुपाद जी ने यहाँ तात्पर्य में बताया ज्ञान का अर्थ है कि आत्मा, भौतिक पदार्थ और जो इंद्रियों के स्वामी ऋषिकेश हैं उनको जानना। So the basic knowledge in the Bhagavad Gita is we are the living entity is a spirit soul, not us, not the body. तो यहाँ पे भगवत गीता में जो पहले ही ज्ञान दिया है शुरुआत में कि हम हैं एक जीवात्मा और हम भौतिक शरीर नहीं हैं। It is tell the living entities are dehi, not deha. Deha means body. Dehi means one who situated in the body. तो जीव देही है, देह नहीं है, और देही जो आत्मा है वो देह के अंदर रहता है। So whatever we find good or bad is origin of Lord Sri Krishna. Nothing can manifest itself in this material world which is not from Krishna. That is the knowledge. तो ज्ञान ये है कि जो भी कुछ यहाँ पे अच्छा बुरा इस भौतिक जगत में हम देखते हैं वो श्री भगवान कृष्ण से ही सब कुछ आता है, इसके अलावा अन्यथा कुछ भी नहीं। Lord says in the this same chapter 8 sloka, Aham sarvasya prabhavo matta sarvam iti paravartade. Aham sarvasya prabhavo. I am the source of all spiritual and material worlds. Everything emanates from me. The wise who perfectly know this engage in my devotional service and worship me with all their hearts. तो इसमें इसी अध्याय में 8वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, मैं समस्त आध्यात्मिक और तथा भौतिक जगतों का कारण हूँ। प्रत्येक वस्तु मुझ ही से उद्भूत है। जो बुद्धिमान या भली भांति जानते हैं वे मेरी प्रेमा भक्ति में लगते हैं तथा हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर होते हैं। So same like the Bhagavatam also, it is at 5:18-12. Yasyasti bhakti bhagavati akinchana. Then that sloka, it is said, all the demigods and their exalted qualities become manifest in the body of one who has developed unalloyed devotion for the Supreme Personality of Godhead Vasudeva. On the other hand, materialistic person or the mystic yogi or great personalities who are not in the devotional service know have such a good qualities. तो इसमें श्री भागवतम में 5, 18 और 12, 5 स्कंद 18 अध्याय 12वें श्लोक में बताया है कि जो भी देवताओं के
गुण हैं, जैसे धर्म, ज्ञान, वैराग्य इत्यादि, वो एक भक्त के, जिसने भगवान के प्रति शुद्ध भक्ति के लिए जो प्रयासरत है, उसमें ये सब गुण उद्भूत हो जाते हैं। और इसके अलावा जो भक्ति में युक्त नहीं है और भौतिकतावादी कार्यों में लगा है, उसमें ऐसे कोई गुण नहीं पाए जाते। Srila Prabhupada, in the Bhagavatam 5:18-13, next sloka, he gives an example, analogy, uh, comparing these devotees with crocodiles. When the crocodiles is inside the water, it has more power than it is outside. Same like when the devotees who are engaged in the devotional service always have powerful or have developed all the good qualities in them. तो जैसे बताया गया कि जो मगरमच्छ होता है वो पानी में, उसमें बहुत शक्ति होती है, परंतु जैसे वो बाहर आता है तो उसकी शक्ति क्षीण हो जाती है। इसी प्रकार से जो भक्त है, जब वो भगवान के हमेशा समीप रहता है, तो उसमें हर प्रकार की शक्ति उद्भूत होती है, हम देख सकते हैं। So another third quality is given is asammoha. Asammoha means freedom from doubt and delusion. तो इसके बाद जो गुण है वो है असमोह। इसका अर्थ है संशय तथा मोह से मुक्ति। Since we are conditioned by material nature, always doubts each and everything, whether it is spiritual or material, and become confused. तो जब हम प्रकृति के 3 गुणों से प्रभावित होते हैं, तो हम भ्रमित रहते हैं कि आध्यात्मिक क्या है और भौतिक क्या है। So we can overcome this uh, doubt and confusion only through understanding the transcendental philosophy. तो ये जो संशय है उसको हम दिव्य ज्ञान के द्वारा ही हटा सकते हैं। So yeah, it is said, whoever in the Bhagavad Gita sloka number 9.3, it says Ashrata Dana Purusha. Those who are not faithful in this devotional service cannot attain me, O conqueror of enemies. Therefore, they return to the path of birth and death in this material world. तो इसमें भगवत गीता में 9वां अध्याय के 3रे श्लोक में बताया है कि हे परंतप, जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वे मुझे प्राप्त नहीं कर सकते, अतः वे इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग पर वापस आते रहते हैं। This Shraddha, faith, can be increased by associating with the devotees and reading Srila Prabhupada book, Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam, Caitanya Charitamrita, and hearing the transcendental message through the self-realized souls. तो ये जो श्रद्धा है, ये सेवामय भक्ति में लग के श्रील प्रपात की पुस्तकों का अध्ययन करके और भक्तों का संग करके इसको हम बढ़ा सकते हैं। If you do this one again and again, slowly but surely we can become free from these doubts and confusion. तो अगर इसमें हम सतत लगे रहें इन सेवाओं में, तो हमारा जो भी संशय मोह है वो दूर हो जाएगा। The first 3 qualities, this intelligence and knowledge, asammoha, all interrelated. तो पहले 3 गुण बुद्धि, ज्ञान और सम्मोह, ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं।
when we engage in the devotional service with full faith and conviction, we can overcome this doubts and confusion and get the knowledge and intelligence. पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ भक्तिमय सेवा में लगेंगे तो बुद्धि के विकास के साथ ये सारे संशय और मोह दूर हो जाएंगे. Then next is shama, tolerance or forgiveness. अगला It है should be yes, it should be practiced one by it should be practiced. One should be tolerant and excuse the minor offenses of others. तो अगला गुण है क्षमा. तो मनुष्य को सहिष्णु होने चाहिए और दूसरों के छोटे छोटे जो अपराध हैं उनको क्षमा कर देना चाहिए. Generally, all living entities have the when they're coming to the devotional service, they are lack of all the knowledges. They're beginners. When they're coming devotional service, they have all the drawbacks. So, in order to encourage them, we should excuse minor offenses and give them proper direction for their progress in the devotional service. तो प्रभु जी बहुत व्यवहारिक बात बता रहे हैं कि भक्ति में भी शुरुआत में जो नए व्यक्ति जुड़ते हैं हो सकता है वो कुछ गलतियां करें या अपराध करें, परंतु हमें उनको उसके लिए क्षमा कर देना चाहिए और समय के साथ फिर वो भी इस भक्तिमय मार्ग में स्थिर हो जाएंगे. At the same time, we should bring them offenseless level by teaching the Vaishnava qualities. और हमें उनको वैष्णव के गुणों के बारे में बताना चाहिए ताकि वो भी उस प्रकार उन्नति कर सके. Then next, satyam or truthfulness. तो अगला है सत्य, ये अगला गुण है. Satyam or truthfulness means facts should be presented as they are for the benefit of others and should not be misrepresented. तो सत्य का अर्थ है कि तथ्यों को सही रूप से अन्यों के लाभ के लिए प्रस्तुत किया जाए और उनको तोड़ना मरोड़ना नहीं चाहिए. Right here, the purport, according to social conventions, it is said that one can speak the truth only when it is palatable to others, but that is not truthfulness. तो यहाँ तात्पर्य में प्रभुपाद जी बताते हैं कि सामाजिक प्रथा के अनुसार कहा जाता है कि वही सत्य बोलना चाहिए जो अन्यों को प्रिय लगे, किंतु यह सत्य नहीं है. So, truth should be spoken in a straightforward way so that other will understand actually what the facts are. This is the definition of truth. हाँ, तो इस प्रकार से परिभाषा बताई है प्रभुपाद जी ने कि सत्य को सही सही रूप में बोलना चाहिए जिससे दूसरे लोग समझ सकें कि सच्चाई क्या है. So here Prabhupada gives example, a man is thief, then he should be represented as a thief for the benefit of the person. तो यहाँ पे उदाहरण दिया प्रभुपाद जी ने, यदि कोई चोर है तो लोगों को सावधान कर दिया जाए कि ये चोर है, तो ये सत्य है फिर. So generally nobody wants call
him as it is generally one person is a fool. If we call him as a fool, he will become angry. Or same like mad person, he will call as a mad person, he will not accept. But for the benefit of others, for him also, so it should be stated as it is. तो कभी कोई व्यक्ति मूर्ख है या पागल के समान व्यवहार करता है तो उसको इस प्रकार से बोला जाए तो वो उनको मानते नहीं, उनको अप्रिय लगता है। परंतु सत्य तो यही है कि उनको सच्चाई बताई जाए। Nowadays, in the modern society, the political people are too much robbing the wealth of government. Even then, the publics are praising him and making garland to him and encouraging. It is misleading the total society. कई बार ऐसा होता है, कोई राजनीतिक किसी प्रकार से गबन करते हैं, परंतु सामान्य जन उस पर ध्यान नहीं देते, फिर भी उनकी प्रशंसा होती है। इस प्रकार से वो सब जनता को मूर्ख बनाते हैं। Then the control of senses means the senses should not be used for unnecessary personal enjoyment. Personal enjoyment. तो अगला है इंद्रिय निग्रह, कि इंद्रियों को व्यर्थ के विषय भोग में न लगाया जाए। So there is no prohibition against the meeting the proper needs of the senses, but unnecessary sense enjoyment is prohibited because it is obstacle for spiritual progress. Therefore, we should control the senses from unnecessary engagement. तो इंद्रियों की Other जो than spiritual. इंद्रियों की जो आवश्यकता है समुचित, उस पर निषेध नहीं है, परंतु अनावश्यक इंद्रिय भोग जो है वो आध्यात्मिक उन्नति में बाधक होता है। इसलिए अनावश्यक उपयोग पर नियंत्रण रखना चाहिए। So, as previously said, we read in the story of the great devotee, king, what is the name, Prabhuji? King one, that Maharaj, Ambarish Maharaj. He engages all his senses in the service of the Lord. तो हमने अम्बरीश महाराज की कथा सुनी कि कैसे उन्होंने समस्त इंद्रियों को भगवत सेवा में लगाया। So he was always get the protection and protection of the Lord. He is saved from the mistreating by Sukra दुर्वासा। Durvasana. तो अम्बरीश महाराज ने अपने इंद्रियों को, समस्त इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाया। इस प्रकार उनकी रक्षा हो पाई दुर्वास मुनि से। भगवान ने स्वयं रक्षा की उनकी। Another next one is Sama, control of the mind. Means one should restrain the mind from unnecessary thoughts. तो इस प्रकार से अगला गुण है शम, जो मन को अनावश्यक विचारों के विरुद्ध संयम से रखना चाहिए। So the mind should not be engaged the unnecessary thought and only think how to cultivate the Krishna consciousness or how to engage them others in the Krishna consciousness, or always think the pastimes of the hard God or the devotees glories. बहुत सुंदर बात बताई प्रभु जी ने कि मन को हमेशा इस प्रकार से लगाना है कि कैसे भगवत सेवा हो और भगवान तथा उनके भक्तों की लीला स्मरण में मन को लगाना चाहिए। And we should not engage the mind
for collecting the money which is over and over, unnecessary money, which is more than required. तो इस प्रकार अनावश्यक धन के संबंध में मनुष्य को चाहिए कि इस धन अर्जन के चिंतन में सारा समय ना गवाए. So here Prabhupada write, the human mind should be engaged in the prime necessity of human beings, which is it should be get through the advice of saints or spiritual master or mahajans. तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि मन को मनुष्य की मूल आवश्यकताओं को समझने के लिए लगाना चाहिए और उसको प्रमाण पूर्वक फिर दूसरों को प्रस्तुत करना चाहिए, और ये सब साधु पुरुषों, गुरुओं और महान विचारकों की संगति में रहकर इसका विकास करना चाहिए. Next is sukham or pleasure or happiness. Whatever अगला है happiness we whatever happiness we attain through material activities are temporary and perishable because it is bodily platform, whereas spiritual happiness is eternal. So because soul is eternal, attained to devotional service to the Supreme Personality God. This is the natural constitutional position of the living entities. तो जिस प्रकार से शरीर संबंधी जो दुख की अनुभूति करता है वो क्षणिक है और अंततः वो वास्तव सुख नहीं है, परंतु वही जो भगवत सेवा के माध्यम से सुख और भक्तों की सेवा के माध्यम से सुख प्राप्त होता है, वही वास्तव में सुख है. So whatever is favorable to develop the Krishna consciousness, devotional service, we should accept that, and that is happiness also. तो जो भी कृष्ण भावना मृत के अनुशीलन में हमें करना है उसको स्वीकारें, वही सुख है. So another quality is dukkha or distress or unhappiness, which is it is against, which is unfavorable for the devotional service. We should reject. Because of unfavorable condition, we become dukkha or distress. तो अगला गुण है दुख, और कृष्ण भावनामृत के विकास के जो कुछ भी अनुकूल हो उसको स्वीकार करना और प्रतिकूल हो उसका त्याग करना, और दुख वह है जिससे कृष्ण भावनामृत के अनुशीलन में असुविधा हो. So next quality is bhava abhava. That means birth and death. Both it is painful, whether it is birth or death, it is painful, but it is related to only body. The soul is eternal. तो दोनों जन्म और मृत्यु दोनों दुखदाई हैं, परंतु ये दुख शरीर से संबंधी है और आत्मा जो है वो शाश्वत है. Next, bhayam. Bhayam means fear. What is biggest fear is death. When death comes, losing the body and materialistic possession. So the people, materialistic people, always fear of death by losing the position and other things. That is why the fear creates, because of our misidentification with the body. सामान्य जन को ये जो अगला गुण है भय, इससे
उनको इस प्रकार से लगता है कि ये शरीर और इसके साथ साथ जो भी शरीर संबंधी वस्तुएं हैं वो छूट जाएंगी, तो इस प्रकार से वो भयभीत रहते हैं। When a person is in Krishna consciousness, there is no fear of losing the body, because they know very well after the leaving the body, they going back to Godhead. तो जो कृष्ण भावनामृत में उन्नत हो गए हैं उन्हें इस शरीर के छूटने का कोई भय नहीं है, क्योंकि वो आश्वस्त हैं कि शरीर छूटने के बाद वो भगवत धाम जाएंगे। So they are always fearless, abhaya. तो वो हमेशा अभय रहते हैं। Next quality is ahimsa. Ahimsa means non-violence. One should not do anything which will put others into misery or confusion, whether तो humans or animals, whatever it is. तो अहिंसा का अर्थ होता है कि कुछ भी ऐसा कार्य ना हो जिससे अन्य को कष्ट पहुंचे। Another important thing is once if you are not engaged the human society in the Krishna consciousness, it is also a ahimsa. सॉरी प्रभु जी। Guruji, I'm telling Uta, we should engage them. The non-violence, we are doing non-ahimsa to other, when the living entities should be engaged in the devotional. If you are not engaging them, that is also ahimsa. यस, थैंक यू प्रभु जी। सो Correct? यस प्रभु जी, अहिंसा का अर्थ ये बताया गया है कि जीव मात्र को भगवान की सेवा में कृष्ण भावना में युक्त किया जाए, वही अहिंसा है। अन्यथा अगर इस प्रकार से युक्त नहीं है या युक्त नहीं किया जा रहा है तो वो है हिंसा। The politician or socialist or philanthropist or give so many promises to the common public, but not fulfilling them. That also makes the public disturb and suffer. तो जैसे कई राजनीतिक व्यक्ति होते हैं जो बहुत से वादे करते हैं परंतु निभाते नहीं, तो इस प्रकार से सामान्य जन उनसे बिल्कुल निराश हो जाते हैं। The government or society or the leaders should encourage the people to in the devotional service. तो जो सरकारें होती हैं उसमें जो नेतागण होते हैं उनको चाहिए कि सभी सामान्य जन को वो भगवान की सेवा में लगाएं। Next is samadha or equanimity, means freedom from attachment or aversion. तो अगला गुण है समता। इसका मतलब है राग और द्वेष से मुक्ति। The material world should be accepted without attachment or aversion, because it is creation of the Lord for the benefit of all the living entities. तो भौतिक जगत है उसको बिना किसी राग और द्वेष के स्वीकारना चाहिए, क्योंकि अंततः यह समझना होगा कि ये भौतिक जगत भगवान द्वारा निर्मित है सभी जीवों के हित के लिए। So each and everything should be used in the service of the Lord. तो इस प्रकार से सभी वस्तुओं को भगवान की सेवा में लगाना होगा। Next, tushti or satisfaction. One should be satisfied with whatever is obtained by the grace of the Supreme Personality of Godhead
and not to engage in material activities to collect more material opulences. तो भगवत कृपा से जो प्राप्त हो जाए, तुष्टि के गुण में ये बताया है, तो बस उसी में प्रसन्न रहना चाहिए, ना कि अनावश्यक कार्य करके अधिक से अधिक वस्तुएं इकट्ठी करने के लिए उत्सुकता दिखानी चाहिए. So here this devotees accepting uh, the qualities said in the Isavasyam Idam Sarvam, that whatever things created by the Lord, it is the property of Lord. We should engage them in their Lord's service. Which quantity allotted to us, we should use them only, not over and over. तो जैसे ईशोपनिषद में जो श्लोक है कि ईशावास इदम सर्वम, की जो भी वस्तुएं प्रदान की गई हैं उनको भगवत सेवा में ही लगाना चाहिए, अन्य किसी इंद्रिय तर्पण के कार्य में नहीं. Next is the tapas and austerity and penance. That following the rules and regulations of Shastras is rising early in the morning and taking bath and attending the Mangalarati, chanting the holy name, reading the Bhagavad Gita and Bhagavatam, all other scriptures, and fasting on Yagadesis. These are all comes under Tapasya. तो तपस्या में बताया है कि जो वेद वर्णित विधि विधान उनका पालन करना, प्रातःकाल सुबह जल्दी उठना, स्नान करना, गीता भागवतम का श्रवण करना, अर्चा विग्रह की सेवा इत्यादि, ये सब तपस्या कहलाते हैं. कभी कभी ये कष्टकारक होता है सुबह जल्दी उठना. So we should not make a fasting and for political purpose, which is not recommended in the Shastra, that are due to done by ignorance and passion modes, which तो will give will not go spiritual advancement. तो एक तपस है कि उपवास करना. तो वैदिक आदेशों के प्रतिकूल उपवास करने की आवश्यकता नहीं है, या किसी राजनीतिक उद्देश्य के लिए भी नहीं है. इनको तामसिक उपवास कहा जाता है, और ये कार्य भी तमो या रजोगुण में माने जाते हैं. उनसे कोई आध्यात्मिक उन्नति नहीं होती. Next is charity. Charity, one should give his 50% of his earnings to some good cause. So charity should be given to a person who is engaged in the Krishna consciousness. तो मनुष्य को चाहिए कि कम से कम आय का 50% किसी शुभ कार्य में लगाए, और शुभ कार्य है कृष्ण भावनामृत में किया गया कार्य. Srila Prabhupada tell in this, Vedas recommend charity should be given to the Brahmanas, because the Brahmanas or the sannyasis or brahmacharis who was in the process of cultivating spiritual knowledge, they don't have time to spend collect money for their livelihood. So it should be given, the charities to be given to the Brahmanas, which is in Sattva Guna mode of तो goodness. प्रभुपाद जी बताते हैं कि दान ब्राह्मणों को दिया जाना चाहिए, क्योंकि वह सदैव आध्यात्मिक कार्यों में रत रहते हैं और उन्हें जीवों को उपार्जन के लिए समय नहीं मिलता, और ब्राह्मण हमेशा सत्व गुण में रहते हैं, तो इसलिए वो दान के सही पात्र हैं. Okay, next, last is yesses and fame. Fame, fame.
according to Lord Chaitanya, one who engaged in the Krishna consciousness or devotional service are said to be in real fame, and others तो are infamous. तो अगला गुण है यश। और भगवान चैतन्य के अनुसार जो मनुष्य महान भक्त के रूप में जाना जाता हो वही वास्तविक यश है, अन्यथा सब कुछ अयश ही है। But whatever the material persons having a fame by doing the material activities, it is ended when the body is perished. So it is not famous. We can understand through the Prahlad Maharaj, Duru Maharaj, all the 12 Mahajans. Their glories are they are glorified always in the Shastra, whereas materialistic person, whatever they do, it is lost when the body is lost. After some time, everybody forget. तो जैसे कृष्ण भावनावत के अलावा कोई भौतिक कार्यों से कुछ यश प्राप्त करता है तो वो यश नहीं, क्योंकि वो शरीर के साथ समाप्त हो जाता है। उनका कोई भी अनुकूल रूप से यश बाद में नहीं रहता, परंतु प्रभु जी ने हमारे महाजनों का, 12 महाजनों का और अन्य उन्नत भक्तों का उदाहरण दिया है कि कैसे उनका गुणगान सदैव हमारे शास्त्रों में रहेगा, तो वही वास्तविक यश है। Normally, the materialistic people, they individually develop good qualities and show to the world we are doing like this. But whereas the Krishna conscious persons who are engaged in the Krishna consciousness, they are automatically the good qualities are developed by the mercy of the Lord when we are engaging in the devotional service. तो कभी कभी लग सकता है कि बाह्य रूप से एक सामान्य व्यक्ति के पास भी कुछ गुण हैं, परंतु एक भक्त को अच्छे गुणों को अर्जन नहीं करना पड़ता, वो अपने आप ही कृष्ण भावनावत की प्रक्रिया से उनमें उद्भूत हो जाते हैं। Hare Krishna Prabhuji, I will stop here. Prabhuji, anybody, Prabhuji want to add something? And already it is late, too much late now. Anybody want to ask her something? हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम सर, थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। The purport was so long, but you have covered each and every aspect of it with various examples from Srimad Bhagavatam, Bhagavad Gita shlokas, your personal relations. So we are very grateful to you. And अभी हम भक्तों से निवेदन करते हैं कि किसी का कोई प्रश्न जिज्ञासा है तो आप अभी अपना हाथ खड़ा कर सकते हैं, तो हम आपको अनम्यूट करेंगे, तो आप प्रभु जी से अपनी जिज्ञासा या प्रश्न पूछ सकते हैं। अभी हमारे पास कुछ समय है। Already 8:40, Prabhuji, if anybody, or we can. I thought this sloga I heard from the His Holiness Bhakti Rasamnus Maharaj. He has given continuously some 4 days, something like that, 1 hour, something like that. I thought we cannot do this because he gives so too much examples and other things. So 1 hour it is, I cut short whatever minimum that. You have